alleging that Five, four, three, two, one, zero. Beautiful launch of SSLV-D2US-07 on a bright sunny morning. We have analyzed the problems faced in the SSLV D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. stage separated. तृतीय चरण को पृथक कर दिया गया है. The Indian Space Research Organization, that is the ISRO, has created history with the successful launch of the small satellite launch vehicle D2 and the successful separation of the three satellites. The three satellites are ISRO's EOS-07, a US-based firm's satellite, Janus-1, and Chennai-based space startup, Space Kids Azadi Sat-2. This particular satellite is a combined effort of about 750 female students across India, the majority of whom are between the age groups of 14 and 17, who learned coding and programmed sensors designed to work in space. It is a story meant to inspire. From the first attempt in August 2022 to the success in 2023, it's an example of how hard work can create history, and this impact is universal. India's space revolution is being powered by the youth of the country. Beyond Azadi Sat-6, there are 6 Indian students will represent India in the NASA Human Exploration Rover Challenge 2023. These students from the Young Tinker Educational Foundation have been chosen to take part in the scientific challenge and will be traveling to the US in April to represent India, competing with over 60 other countries. Talent, teamwork, grit and determination is what these children represent and are scripting India's future as a global space power. Let's get them into conversation and welcome to A Billion Ideas. We have Anil Pradhan, co-founder of Young Thinker Educational Foundation, and he's joined by Basudev Boy. He's a 14-year-old from Cuttack. I can also see Kanksha Das, 17-year-old from Children's Home in Bhubaneswar, also Om Padi, 16-year-old from Bhubaneswar. Thank you so much. Let me bring in the ISRO team, Dr. Srimati Kesan. He's the founder, CEO of Space Kids India. We also have students being joined with their mentors. Chinthya with students from government school in Tamil Nadu. Mithilesh with students from government school in Chhattisgarh. Mrs. Fasila with students from SMCT Sahib Mame School, Azikode, Kerala. Ladies and gentlemen, you should know them. That is the reason why I've brought all these students right on your television screens. I'm going to begin with you, Dr. Kesan. An all-girls team of 750 coming from across India. How did you get the idea of identifying these girls and putting them together for this mission? And what really was the criteria? Well, Maria, I've been, thinking and working with a lot of girl students for quite some time.
But I thought for the 75th Indian independence anniversary, there needs to be something really extraordinary that the world will get to see our country. So what big can it be than bringing the Betis of India? Ji. So I thought bringing in all the government school girls, 75 schools, 750 girl children from length and breadth of the country, give them this platform, create this satellite and launch it. In fact, you wouldn't believe I was in the ICCU when I gave the proposal to ISRO. And I'm so gratified that the chairman ISRO has accepted the proposal and gave us an opportunity. And a special thanks to Honorable Prime Minister for accepting that, having that confidence that yes, this group of 750 girls will definitely pull up a good show. So I'm extremely They happy certainly to have. be sharing this with you. They certainly have. मिथिलेश, मैं आपके पास आऊंगी. यूजुअली बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ और बहुत सारे जो इस हिंदी बेल्ट के जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें फैसिलिटीज सही नहीं होती है, तो शायद वो कुछ बड़े अचीव नहीं कर पाते हैं. आपके साथ जो बच्चियां हैं, देखिए उन्होंने स्क्रिप्टली हिस्ट्री में अपना नाम जोड़ दिया. जी मैम, ये काफी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हो पाए. और हमारे लिए स्पेस जो है एक बहुत बड़ी चीज है जो हम सपने में सोचते थे. और जहां तक मेरा बात है, मैं खुद इसरो में काम करने के लिए हमेशा सोचता था, लेकिन कभी ऐसा संभव नहीं हो पाया. एज अ टीचर के रूप में जब मैं यहाँ काम किया तो मेरे को ऐसा मौका श्रीमती केसन मैम ने दिया जिससे मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ, अपने सपनों को बच्चों के साथ पूरा कर पा रहा हूँ. साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे असुविधाएं होती हैं, लेकिन अभी जब से एटीएल लैब सभी जगह खुला है, तो वो सारे जो एटीएल लैब है उसमें हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं. हमें सारे जो योजनाएं हैं उनका मौका मिलता है कि हम उसका लाभ उठा पाएं. साथ ही साथ यहाँ हर प्रकार के सामग्री उपलब्ध हैं जिससे हम अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर पाते हैं. मिथिलेश जी, आप बच्चियों से जरा बात करिए और पूछिए कि उनको अपने से ये उम्मीद थी कि वो इतने बड़े मिशन का पार्ट बन रही हैं. मेरा नाम मीरा साहू है. मैं कक्षा 10वीं डी की छात्रा हूँ. मेरे स्कूल का नाम आसिफाई गोलछा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला महासमुंद छत्तीसगढ़ से है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान देंगे हम सब, क्योंकि इसरो एक इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें हमने काम किया है सैटेलाइट के माध्यम से. इसे हमने कभी सोचा नहीं था और हमारे परिवार वाले भी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से और यहाँ काफी लोग गाँव से आते हैं, ग्रामीण माहौल है छत्तीसगढ़ में ज्यादातर, तो कभी सोचा नहीं था ऐसा कि हम कर पाएंगे. छत्तीसगढ़ को हम पूरे भारत में आगे ला सकते हैं और इसका काम हमें सौभाग्य मिला कि हम छत्तीसगढ़ को पूरे भारत देश में ला सकते हैं. इसके लिए धन्यवाद. आपको पता नहीं है, मुझे आपकी आवाज में वो इतनी बुलंदी लग रही है, इतनी खुशी हो रही है सुन करके कि आप लोगों ने वो हिम्मत दिखाया और कहां से आप कहां पहुंच गई और आज हम आपसे बात कर रहे हैं. आई एम प्रिविलेज्ड and honored. Let me go now to Kerala, where I am being joined by Mrs. Fasila. Mrs. Fasila, first मैं आपसे सवाल पूछूंगी. यूजुअली बोला जाता है जो मैरिड वुमेन हैं वो अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को इतने एक्टिवली परस्यू नहीं कर सकती हैं. आपने वो किया और आपके साथ साथ जो बच्चियां हैं आपने उनको भी इंस्पायर किया और आपने स्पेस की बात की. Thank you, ma'am. This is a wonderful opportunity we received. First of all, I thank ISRO team and also Sati said CEO Madam Dr. Srimati for giving us such a wonderful opportunity for our basically rural kids from Kerala state, and all our students are very much inspired by
this project. They actively participated in this project, and we also got the opportunity to witness the very launching of the satellite. So all the students are very, I don't know what to say. They are very much thrilling or the experience. मैम चलिए बच्चियों से बात करते हैं, बच्चियों से बात करते हैं और मुझे उन लोगों की आवाज सुननी है और ये जानना है कि क्या उनको उम्मीद थी खुद से कि इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा और स्पेस के बारे में उन्होंने क्यों सोचा? Yeah, we are very happy because yeah, I have a hope satellite launching will success as SLPD2, and we are very happy, and we have no words to describe our happiness. How was the entire journey like, pursuing a career in space? How was this entire, journey of which starts in 2022 and goes till 2023? And in the very, it's about success, failure, but you realize that it has become such a huge success. Yes, ma'am. Yes. If you heard me, मेरा आपसे ये सवाल है that, what was the feeling like? Were you really confident of this success? Yes, ma'am. Okay. We are really confident. Okay. Let me go now to Tamil Nadu and bring in Cynthia and her students. What inspired you to pursue a career in space? Hi, ma'am. Hi. This is Cynthia, Science Meta, Government Girls Higher Secondary School, Thirumangalam. Yes. Actually, in my 25 years of experience, this is the most gifted moment for me. For that, we have to thank our princess, Srimati Keshan ma'am. We never think about this project a little bit earlier, but we got a gifted moment. We got a gifted children also. That was a stunning moment. Really, we can't say any words to thank her and her team. Wonderful experience. Yes, and ma'am, really we searching words to say thanks. Yes, we have also seen that this current government is doing a lot for innovation and building that scientific temperament among students in schools. They are sponsoring research in new technologies and higher educational institutes. With someone who has had a successful project behind her, what would you want the government to do more? Government आपके लिए और क्या करे? Yeah, ma'am. We are requesting government to do more and more projects like this. We are also asking, ma'am, our Srimati Keshan ma'am also. Government also must do. There is a bookish knowledge is nothing according to me. So doing practically, they are getting more knowledge. They are getting very interested. Actually, we learned something. Really. That is the truth. Okay. We have learned something about space. I will speak to the students now who are with you, ma'am. Yeah. The general belief is that people from modest backgrounds study in government schools. Did these students get overwhelmed at any point because of the enormity of this entire, journey? Yeah. Because you will be inspiring future generations. आप inspiration बन गई हैं. Yeah. Inspire that much. I'm P. Adsarani. I'm studying 11th standard in Government Girls Higher Secondary School, Thirumangalam, Madurai district. Actually, my father, P. A. Paul, he is a farmer, and my mother, P. Nisia, she is homemaker. They are very enjoying this project. We did the project. They're happy and they inspired me. And I did the project. Tell me, I will ask Mithilesh to ask his students. Mithilesh, अपनी बच्चियों से पूछिए, what will you like the government to do more to support and nurture that scientific temper in schools? For us, for our school, our PTA head and SMDC head, they had done a lot of us, ma'am.
Okay. Really, we are going to ask permission, and we are going to ask Yes. permission to do Girls this in in our Chhattisgarh. government. Girls in Chhattisgarh Government School, please go ahead. बताइए. What more should the government do for scientific temper so that you get prepared for a more competitive environment? हेलो मैम, Yes. गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। यहाँ हमारे लिए हमारे स्कूल में एटीएल लैब का निर्माण की है और यहाँ गवर्नमेंट हमें आईटी, हेल्थ केयर और बहुत सारी शिक्षा दे रही है और हमें यहाँ एटीएल मतलब अंतरिक्ष की दुनिया और अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए हमें यहाँ मौका दे रही है एटीएल लैब से। और हम यहाँ स्कूल से भी निकलते हैं तो हमें एटीएल से जुड़े रहने का अवसर मिलता है मैम हमारे स्कूल से। Okay, let me go back to Dr. Kesan. Dr. Kesan, are there more such projects in pipeline? And what made you are of course talking about the response that you got from the government. They were very supportive from day one. What has changed? What made you realize that an idea of this nature was possible because of the current regime? I have to tell you, Maria, because the previous question, there was one bit that I wanted to answer. Yes, please. I took the name list from Niti Aayog. Niti Aayog had supported us because it's very difficult to run through the length and breadth of the country. We do not know because we are in Chennai and we do not know what and who are the government schools across the country. So they gave us the list and that is how I started calling the schools. And then about 75 schools we chose from across the country. Well, and also what we really expect from the government is one huge thing. I want to really make a request is we need a space research park attached to ISRO wherein children can have first-hand experience of space. We can have simulators there. We can have a 7D theater wherein these children from the rural areas need not spend lakhs of rupees to go to NASA to experience all that. We can do it absolutely economical, and these children with immense knowledge, if they are able to have a hands-on experience there, then I think they can do wonders. Yes. Well, what else the government has supported us is big time for the launch. Because for a launch, it almost costs about 1 to 2 crores, which was not affordable to us. So, that way we are extremely, thankful to our Honorable Prime Minister for giving this opportunity. And of course, our chairman, ISRO chairman, Dr. Somnath, and InSpace chairman, Dr. Goenka. Dr. So without Kesan, them, it would have been very difficult. Dr. Kesan, more bring success in for all you. these girls. More success for you. And certainly, I'm so elated to say that when I'm looking at these faces, young girls, flying high, dreaming big, it makes me extremely proud to look at them. May Allah bless them with much more success than we can actually imagine. Let there be more such women in the skies and in space. Let me bring in the other set of panelists who are joining us. Anil Pradhan, how are you feeling after collaborating with NASA directly from Odisha? So बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ। और जब हम लोगों ने शुरू किया था 2015 में, वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम एन आइलैंड विलेज इन ओडिशा। तो तब कोई सोचता नहीं था कि एक ओडिशा के गांव से बच्चे लोग निकलेंगे और नासा रोवर चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे और इस प्रकार का कुछ होगा। सो ये था हमारे लिए तब एक अनथिंकेबल चीज। और हम लोग का एक ही मोटो रहता है, डू अनथिंकेबल। तो एक बार जब हम लोगों ने इस अनथिंकेबल को कर दिया तो अब ये थिंकेबल हो चुका है। अभी जब एक बच्चा एक एक गाँव से निकल रहा है तो उस गाँव के बच्चे, उस शहर के बच्चे अब कह रहे हैं कि यदि हमारे गांव से ये लड़का यदि निकल के वहां पे जा सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आकांक्षा और ओम दोनों चिल्ड्रन होम में रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। आकांक्षा, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी कि स्पेस स्टडीज आपने कैसे चूज किया? और ये यूजुअली माना जाता है बहुत ही you need some kind of financial and family support to pursue such career. What is the message that you want to give to other students?
पहले मैं यह बताऊंगी कि सबको मेरे नमस्कार। मैं हूँ आकांक्षा। तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन जिसमें मैं compete करने के लिए जा रही हूँ, ये मेरे लिए बियॉन्ड माय इमेजिनेशन था। तो यंग थिंकर से हम जो इंटरव्यू दिए थे, यंग थिंकर से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए हम बहुत ही थैंकफुल है। और ऐसे ही हमारे लिए ये सोचना, आप जैसे बताया, हमारे लिए ये सारे सोचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्पेस के बारे में जानने के लिए मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था। क्यों प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए मैं अपनी इंटरेस्ट किसी को बता नहीं पा रही थी। तो मैं आद्रुता चिल्ड्रंस होम में रह रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। और मैं जब 5 साल की थी तो मेरे पापा गुजर गए, और मेरी मम्मी मेरे फाइनेंशियल जो भी हमारे फाइनेंशियल जरूरत थी उसको पूरा नहीं कर पाए, तो मुझे चिल्ड्रन होम में छोड़ दिए। तो चिल्ड्रन होम के रहने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी अभी मिला है, और अभी मैं कुछ बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बन गई हूँ। बिल्कुल। जैसे कि हम एक स्टेम एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये मिशन के दौरान हम एक स्टेम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जहाँ पे हम सारे गवर्नमेंट स्कूल को जाके उनको एक स्टेम वर्कशॉप दे रहे हैं, उनको न्यू न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उनके कैसे हम उनको रीयूज करके कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमारे बजट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है, ऐसे उनको नॉलेज देते हैं और उनको बताते हैं। जबकि हम एक रोवर बना रहे हैं और नासा जा रहे हैं, वो लोग सोचते हैं और तुम लोग जा रहे हो, वाह ग्रेट है। तो हमसे इंस्पायर होके कुछ बच्चे और भी निकल रहे हैं हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुरूर है, हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोला, ये देश के लिए, और आप इंस्पिरेशन तो बन गई हैं। देखिए आप टीवी पर हैं, हम आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि शायद हम भी कुछ पढ़ लेते, साइंटिफिक और स्पेस की बात कर सकते। ओ मुझे ये बताइए, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या करियर परस्यू करिएगा? मेरा एम है एस्ट्रोनॉट बनना है। तो मुझे जब मैं छोटा था, मुझे स्पेस के ऊपर जानने के लिए मुझे बहुत आग्रह था। तो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। फिर आपकी दोस्ती आकांक्षा से कैसी हुई, और आप लोग का क्या ये स्पेस और नासा के ग्राउंड पर आपकी दोस्ती हुई कि चलिए रॉकेट की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं? हाँ, ऐसे ही हम लोग तो चिल्ड्रंस होम में रह रहे थे। हाँ। उसका क्लास तो मेरे से एक बैच नीचे है वो। हाँ। सो मेरा जूनियर बैच है, तो उन लोग के साथ इतना बातचीत नहीं हो रहा था। हम जब मिलके पढ़ाई करते थे तो तभी कुछ कुछ क्लास में ली हूँ उन लोग का, मैथ क्लास, जैसे मैथ या फिजिक्स क्लास कुछ ली हूँ उन लोग का। मैं उसको सारा क्लियर, जो बेसिक्स होता था उसको क्लियर करता था। तो उसके बाद उसके दौरान वो बताया था कि स्पेस के रिलेटेड थिंग्स में उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो ये मुझको बताया था और हमारे सभी में वो बात फैल गया था ऑलमोस्ट। तो इधर आके टीम कैसे बनी बताओ, जो अलग अलग स्टेट से भी। हाँ, जो हमारा टीम है, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा ये जो टीम है 6 मेंबर्स है, टोटली 6 मेंबर्स है, और हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से है। कोई एक मुंबई से है, तो कोई दोनों आंध्र प्रदेश से है, और हम तीनों उड़ीसा से है। हमारे अंदर लैंग्वेज डिफरेंसेस इतना ज्यादा है कि हम कभी इमेजिनेशन नहीं किए थे कि इतना ज्यादा होगा भी। तो वो लोग, हम जब हिंदी में बात करना शुरू किए तो बोले कि हमारा नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है, हिंदी उन लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो दोनों बच्चे हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर क्या किया? लोग सिर्फ इंग्लिश। सो इधर इन दोनों को इंग्लिश समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो फिर से हमारे अंदर थोड़ा दोस्ती बढ़ गया, कोऑपरेशन इतना ज्यादा था हमारे टीम के अंदर। तो सारे अभी मिलके काम कर रहे हैं, सारे के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर इतना ज्यादा है कि सारे टीम से हम लोग, जैसे लग रहा है कि लाइफ में जितने टीम में भी काम की हूँ स्कूल लाइफ में, सबसे बेस्ट टीम मुझे मिला है इस बार। और हम लोग लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां आपको देख रहे होंगे और आप इतनी मजेदार बातें कर रही हैं, मुझे ये बताइए, देश के लिए ये करने का जज्बा कहां से आया? बचपन से ही था ऐसे, कुछ करेंगे देश के लिए, तो कुछ करेंगे जरूर, और खुद के लिए भी कुछ करेंगे, ऐसे ही कुछ था। क्योंकि हम खुद के प्रॉपर्टी से नहीं जी रहे हैं, हम देश के प्रॉपर्टी से जी रहे हैं, और हम चिल्ड्रंस होम में रह रहे हैं, आद्रुता चिल्ड्रन होम में। सो
ये जुनून बचपन से ही था कि हम देश के लिए कुछ करेंगे जरूर, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे यंग थिंकर ने दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि इससे मैं स्टार्टअप कर सकती हूँ। Thank you so much. All your stories are full of inspiration. Thank you so much, Anil Pradhan and your team, Dr. Srimati Kesan, and all students who are joining me from Chhattisgarh, Tamil Nadu, Kerala. You are an inspiration for an entire country. Lot of success for you and lot of success for our great country. Thank you so much. With that, it's a wrap from me. With that, it's a wrap for me. I'll be seeing you with another edition of A Billion Ideas, the power of a billion. That's what our country is.